Hello, good evening, everyone. I'm so sorry for the technical issues, but how I intend to take this session is I'll just give you a little bit of brief background about myself and my association with Piyush sir and how he sort of helped me with the ethics preparation. And the second thing that I want to talk about is how so I had scored 90 in my second attempt where I had written the mains, and this time I have scored 129, which is a significant jump. So I just want to talk about. See, I really don't know what worked or what actually did not work, but I have certain, I made certain changes in my writing style, or things that I feel might have been helpful. So I want to share those things with you. And the third thing that I want to do is I just want to show you a couple of answers because I'm sure Piyush sir must have spoken about things that he had he advises, and I will just show you as to how I implemented those, so as to give you a little bit of practical perspective on how that works. So this is how we will divide this session. I think I'm going to take around 20 minutes. Someone can just message me on chat if that is more or less, but that is how I will divide the time. So first, just giving you a background about myself, I am Deepika. I scored 129 in my ethics paper, and overall I had a rank of 151. This was my third attempt. In the first attempt, I couldn't clear the prelims. The second one, I reached the interview but could not get a rank. And here, this time, I've gotten a rank. So that is about myself. I've done my graduation from SRCC. I've worked for some years. I've also done my MBA. So that is how broadly my what my background looks like. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो. I'm sorry, I can't see any of you. So, if there's anything you can convey, and then, I can read the chats at least. So I'll just start with, how I got associated to Piyush sir's class. So I remember there was a topper, Mehak Jain, and she had posted about her experience of essay and ethics with Piyush sir. And that actually encouraged me to attend, just like you are attending this session. I was one of you last year and I attended one of these sessions. So I did not have, any long association with him, but I just attended one of those sessions that you are attending, and then the style of teaching really suited me. मुझे ऐसा लगा कि वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जो निटिग्रिटी वाली चीजें बताते हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैं उस लेवल में थी जहां पे मैं ऑलरेडी 90s में स्कोर कर रही थी, लेकिन उस 90 को आप 110 120 तक आप कैसे लेकर जाओगे. आई थॉट पीयूष सर इज दैट पर्सन हु कैन सॉर्ट ऑफ हेल्प मी डू दैट. तो इस तरह से देन आई टुक अप, देयर वाज अ मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम. तो जो सर बता रहे हैं कि वो जो क्लासेस करवाते हैं व्हिच इज अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, तो उसमें वही था. आई टुक अप सम 4-5 क्लासेस ऑफ केस स्टडीज, एंड देयर यूज्ड टू बी एन असाइनमेंट शीट, और मैं वो सॉल्व करती थी. एंड देन ही वुड डिस्कस हाउ to go about those answers, and I think that was really useful for me. And then of course we did one-on-one sessions. So would sit down. I think those one-on-one sessions were also super useful because जो चेक करके आपको भेजा जाता है, कितनी बार आप समझ नहीं पाते हो कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो एक्चुअली आपको क्या कन्वे करना चाहता है. सो जो आपका फेस टू फेस वन-ऑन-वन सेशंस मेरे होते थे पीयूष सर के साथ, आई थिंक उसमें सर मुझे एग्जैक्टली समझा पाते थे. So I did all of those sessions, and I'm really thankful. I mean, of course, this is the ethics part of it, but he also helped me because I was going through a lot of pressure, anxiety, and he really helped me overcome that. Be it checking on me कि मैं exercise कर रही हूँ या नहीं. So even small things, I think he pays a lot of attention on every student of his. So thank you so much, Piyush sir, if you're there around. So I will just start with what are the things that one should keep in mind. कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो पीयूष सर ने ऑलरेडी बताई हो, सो उसके लिए माफी चाहूंगी because I haven't attended the session, so some things might be repetitive, but these are the things that I really found useful. Number one is time management. I'm sure sir must have spoken about it, but मेरा 90 आने का कारण बहुत बड़ा कारण था कि मैंने केस स्टडी में पिछले साल बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया. and I just spent like some 1 hour 10 minutes on the
1 hour 10 minutes on the sort of the questions, the theory questions, and that proved disastrous for me. So I think wo equal weightage dena is, and it's very, it is told to you as an aspirant so many times, but we still overlook it. So I think this is something which is non negotiable. मतलब आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपको अपने हर आंसर का हिसाब रखना है. एंड जैसे ही 3 घंटे हुए हैं, आई यूज्ड टू ड्रॉप माय पेन. मेरे मार्क्स बहुत खराब आते थे, मतलब जब मैं इनकम्प्लीट छोड़ती थी, और वो मुझे पिंच करता था. सो दैट शुड पिंच यू, यू वंस यू स्कोर बैड मार्क्स, बिकॉज हम सोचते हैं कि अभी हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर एग्जाम में 10 मिनट तो मैनेज हो ही जाएगा, 5 मिनट तो हो ही जाएगा. वो नहीं होगा. So the moment you reach 3 hours, you have to drop your pen and get bad marks. I think that is the only way you're going to be strict with yourself. So I think one is time management. Equal, मेरा वही रहता था कि मैं equal time दूंगी. In fact, तो and इस साल पेपर extraordinarily long था. आप देखोगे सेक्शन ए के क्वेश्चंस भी इतने लंबे थे कि क्वेश्चंस पढ़ने में इतना समय लग जाता था. But because I had a very disciplined approach, during my preparation, तो मेरा बहुत फिक्स था कि मैं केस स्टडी में इतना ही टाइम लगाऊंगी. मेरा सिर्फ, आई रिमेम्बर, जो 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, वो लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट रह गया था जब 1.5 घंटे खत्म हुए थे. एंड आई जस्ट ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड आई मूव्ड टू माय सेक्शन ए. मैं पहले केस स्टडीज करती थी. मैंने पूरा जो मेरा सेक्शन ए है वो कंप्लीट किया. जो लास्ट का 1 मिनट बचा था, उसमें मैंने जाके वो, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि एक क्वेश्चन रह गया है, एक सब पार्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का एक सब पार्ट रह गया है जो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगी. सो देन आई कवर्ड अप इन माय सेक्शन ए, और मैंने जाके वो भी कंप्लीट किया. सो देन आई मैनेज टू कंप्लीट दैट पेपर. सो यू हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर कंप्लीट कर रहे हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट. सो यू हैव टू, एंड राइटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज करके बस कंप्लीट कर रहे हो. सो आई थिंक दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. द सेकेंड इज हैविंग टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स. और नोट्स, तो मैंने तो अपने नोट्स जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए थे, कि जो फिलोसफी वाला आपका पार्ट था, जिसमें से आपके बहुत एग्जाम्पल्स निकल जाते हैं, जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, आपका जो पूरा आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूटिलिटेरियनिज्म और कांट फिलोसफी, ये वो. सो वो वाला पार्ट एक सेक्शन था. सेकंड वाज ऑल द गवर्नेंस पार्ट ऑफ इट, जो अकाउंटेबिलिटी, जो सिविल सर्वेंट के वर्च्यूज एंड वो होते हैं, करेज, एम्पैथी, ऑल ऑफ दैट, उनका डेफिनेशन. एंड द थर्ड पार्ट वाज द अदर मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स, या जो चीजें CSR, बिजनेस कॉर्पोरेट एथिक्स, ऑल ऑफ दैट पार्ट. सो मैंने इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने ईच टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नोट्स, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, बिकॉज मैं काफी लोगों को देखती हूँ वो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस लिखे जा रहे हैं. लाइक, यू हैव टू इवॉल्व विद द पेपर. The examiner is not asking you to write theoretical, define X, define Y. It's asking more application based questions. So मुझे याद है कि conflict of interest में आपको conflict of interest का definition नहीं याद करना है. You have to see what are the situations in which it will occur. That should be in your mind. How are you going to deal with it? So I remember Piyush sir ने, I think it was a 6R framework या कुछ ऐसा था कि आप recluse करोगे या rescue करोगे, या उस केस से, या फिर if you'll get an independent person. So I still remember there was that 6R framework. So जैसे वो nitty-gritty बताते हैं कि because कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके किसी भी केस स्टडी में आ सकता है, या किसी भी उसमें आ सकता है. तो आपके नोट्स इतने प्रैक्टिकल होने चाहिए कि आप सोचो उसके बारे में. जब आप करेज के बारे में नोट्स बना रहे हो, तो डेफिनेशन को रटने में टाइम वेस्ट करने की जगह ये देखो कि मैं कहाँ पे मैं क्या एग्जांपल्स दूंगा करेज के लिए, या किस टाइप के क्वेश्चंस में करेज का यूज हो सकता है, कि स्टडीज में आप कैसे यूज करोगे. सो थिंक अ लिटिल बिट. Ethics is a paper जहाँ पे of course guidance of teachers like Piyush sir is very important, but also you have to put in a little bit of thought. So I think that is my second, have those concise notes. और मैं उस notes को हर stage में concise करती थी, कि मैंने जो मेरा first round of revision है, जो जैसे अभी मेंस के बाद मैंने लगाया, उसमें मैंने एक पूरा राउंड किया. बट जब मैं वो रिवाइज कर रही थी, तो मैंने एक शॉर्टर नोट्स बनाए, कि मेरा जब सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन होगा एग्जाम से व्हाटएवर 10-15 दिन पहले, तो मैं फटाफट सारे टॉपिक्स रिवाइज कर पाऊं. या मैंने इतने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे कि मैं जब भी मॉक्स लिखने जाऊं, मेरा पूरा एथिक्स का नोट्स 10 पेजेस में थे. उसमें बहुत डिटेल नहीं था. उसमें जस्ट जो मेन कोटेशंस जो मेरे को याद करके रखनी है, या फिर जो मेन एग्जांपल्स मुझे याद करके रखने हैं, जो मेन डायग्राम्स में यूज करूंगी, जो केस स्टडी में सर ने डिफरेंट अप्रोचेस बताए थे, तो मैंने वो सिर्फ 7 से 8 पेजेस में था.
और मैं जितनी बार मॉक्स लिखने जाती थी एथिक्स का, मैं वो फटाफट से इवन इन रिक्शा में बैठ के मैंने वो रिवाइज किया हुआ है। तो इट बाय द टाइम इफ यू रिटन 2-3 मॉक्स, वो एग्जाम आते आते आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली बैठ जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि पीयूष सर ने वो 5-6 कोट्स दिए थे कि गुड ऑफ वन इज गुड ऑफ ऑल, कॉन्शियस इज द सॉफ्टेस्ट पिलो टू स्लीप ऑन। और ये ऐसे कोट्स है जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, क्योंकि करप्शन वाला कुछ केस स्टडी होगा, उसमें भी आप वो एज अ कंक्लूजन लगा सकते हो। गुड ऑफ वन इज गुड ऑफ ऑल आपकी काफी डायलेमास वाले क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। सो these things should be at your tips. So I think that is my sort of second advice. The third thing that really helped me was of course your examples. Very important, but examples ko wo same there are 2-3 some examples जो हर कोई लिखता है। थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके रखिए। मतलब अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह जाइए, बट आपने इतनी प्रेपरेशन करी है जीएस में, अपने ऑप्शनल में, कि उसमें इतने एग्जाम्पल्स उससे निकल कर आएंगे। आई रिमेम्बर मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें तिरुवल्लुवर का देयर वाज सम कोट, तो मैंने वो याद कर लिया कि फॉल्सहुड बिकम्स ट्रूथ इफ इट लीड्स टू अनब्लेमिश्ड गुड, या ऐसा कुछ था। वो आपके सॉर्ट ऑफ वो वाले डिबेट्स में यूज होता था, यूटिलिटेरियनिज्म वाले क्वेश्चंस में आप वो यूज कर सकते थे। तो वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे से कहीं पे मैंने पढ़ा था, वो यूज किया। सिमिलरली मेरा कॉमर्स ऑप्शनल था। पीपल से कॉमर्स ऑप्शनल का एथिक्स में क्या काम होगा, बट आई रिमेम्बर कॉमर्स में हमें एक मॉडल सिखाते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कैसे लाते हो, कि आप अनफ्रीज करते हो चीजों को, फिर चेंज करते हो, फिर फ्रीज करते हो। तो उसको मैंने अपने कहीं पे केस स्टडी में यूज किया था कि आप वो आप विलेजर्स या ट्राइबल्स, उनको आपको कुछ किसी चीज के लिए एनकरेज करना है, तो आप वो एक फ्लो चार्ट बना दो। वो मैंने अपने ऑप्शनल से सोच के लिखा था। सिमिलरली आपके ऑप्शनल में इतनी सारी चीजें होंगी, सो जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट। एंड पीयूष सर यू वुड ऑलवेज टेल मी कि सिंपल एग्जांपल्स दो, यू डोंट ऑफ कोर्स आप लर्न करो। जैसे कुछ आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के अच्छे एग्जांपल्स थे कि someone he sang the national anthem to calm down the crowd. There was an IAS officer in Haryana who helped bust the teacher scam. So ये तीन चार I had that compilation ready, और वो मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि मुझे क्वेश्चन देख के सोचना भी नहीं पड़ता था कि मुझे क्या एग्जाम्पल लिखना है। सो आई थिंक दैट, but more than I think writing examples, explanation is very important. Answering what the question is asking is very important. That is my fourth advice, because I see people कि उनको कोई question पूछ लिया और वो सिर्फ examples दिए जा रहे हैं। I'll show you some of my copies. I've never done that. I will give an introduction. उसके बाद जो भी मैं सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी। अगर क्वेश्चन if that question, इस बार तो जो पेपर आया था उसमें 2-3 सब पार्ट्स थे, और मैं हर सब पार्ट को एक डिफरेंट बकेट में डालती, एंड हर सब पार्ट की I'll write 2 or 3 bullet points. हर bullet point के नीचे एक छोटा एग्जाम्पल होता था। Example is only supporting your argument. It is not so for example there is this question मैं कुछ मॉक में देख रही थी कि moral absolutism. तो moral absolutism आपके उसके क्या disadvantages होते हैं। तो it leads to it removes the possibility of situational ethics or molding according to situation. फिर उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया। सो इस तरह मैं पॉइंट्स देती थी, छोटे छोटे पॉइंट्स दो, छोटे छोटे उसमें एग्जाम्पल्स लिखो, तो विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। एन एग्जाम्पल शुड ओनली बी अ सपोर्टिंग एलिमेंट एंड नॉट द मेन the main answer. So I think that is one of the important points. Now speaking about I think I'll talk a little about case studies. Case studies में जो चीजें सर ने बताई है कि आप एक्सेसिव मेरिट डीमेरिट में फोकस करते हो, actions लिख रहे हो but argument नहीं लिख रहे हो. I'll show you 2 of my papers. One before sir had given me feedback, and the second one which I had written for some other test series, कुछ और कहीं और मैंने ली थी, and that was after Piyush sir gave me feedback, and you can see how much of difference वो जो 2 feedback उन्होंने मुझे दिया था, और मैं वही गलतियां कर रही थी कि मैं वो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने में ही अपना सादा समय वो कर देती थी। मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स तो लिखती ही या I would not write the reasons कि मैं वो क्यों कर रही हूँ, और मैं एक्शंस लिखती थी कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, बट मैं रीजन नहीं लिखती थी और उसकी इम्प्लीकेशन नहीं लिखती थी कि उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है उसके साथ मैं क्यों डील करने के लिए रेडी हूँ, व्हाई डू आई एक्सेप्ट दोज डीमेरिट्स।
तो आई थिंक वो चीजें सर की उससे बहुत मुझे हेल्प हुई. आई वुड नॉट रीड द ये जो छोटी छोटी चीजें सर बताते हैं, ये आप एक्चुअली मैंने क्लास में रियलाइज किया, क्योंकि जब मैं केस स्टडी सॉल्व करके आती थी एंड देन सर वुड बी लाइक ये इंजीनियर है तो तुमने इसमें प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन इंजीनियर लिखा या नहीं लिखा, प्रोफेशनल ड्यूटी. एंड देन I'd be like, oh, that was such an obvious point, why did I not write that कि उसका प्रोफेशनल ड्यूटी है ये. बट दैट ओनली व्हेन सर पॉइंट्स आउट, वो मेरे दिमाग में फिर बैठ गया कि नहीं, जो भी लिखा है उसका प्रोफेशनल एथिक्स इज इम्पोर्टेंट. एक गलती जो मैं करती थी, जो केस स्टडी में सर का एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया, वो था कि मैं जब एथिकल डायलेमा लिखती थी तो मैं रैंडम पॉइंट्स लिख रही होती थी. सर टोल्ड मी थिंक अबाउट एवरी स्टेक होल्डर्स स्किन इन द गेम, कि आप हर स्टेक होल्डर के बारे में सोचोगे तो आपको अपने आप आपके सारे एथिकल डायलेमास आ जाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैंने मेंस लिखा था, उसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर से रिलेटेड केस स्टडी था. एंड आई रिमेम्बर मैंने उस केस स्टडी में I never thought about the implications that it will have on the company and its and the people who are working in that company. मैंने वो सब पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा ही नहीं था, बिकॉज मैं सब बोलते हैं कि स्टेक होल्डर्स का डायग्राम बना के स्टेक होल्डर्स लिख दो, बट उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन ये है कि आप जब एथिकल डायलेमास लिख रहे हो, आप मेरिट्स डीमेरिट्स लिख रहे हो या आप रीजंस लिख रहे हो, आपके हर एक action ka implication is going to happen on each of those stakeholders. So I think that was one very important piece of advice that Piyush sir gave me, and he made me do it. मैं बार-बार गलती करती थी कि मैं किसी stakeholder को छोड़ देती थी कि अच्छा ट्राइबल्स है तो मैं कंपनीज में जो एम्प्लॉइज है उनका छोड़ दूंगी या कुछ ना कुछ मैं छोड़ती थी, और बार बार मुझे सर वो पॉइंट आउट करते थे कि तुम सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं कवर कर रहे हो, विच इज व्हाई योर आंसर इज नॉट होलिस्टिक. सो आई थिंक वो चीज वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव को अप्लाई करो, उसको सिर्फ डायग्राम बनाकर लिखना नहीं है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस. Apart from that, in terms of case study, I think I had made जो sir ने, I don't know if वो essay वाले workshop में हुआ था या ethics में, but sir had given a compendium of different kinds of ethics that you usually use. तो मेरा वो बहुत ही स्ट्रांगली मैंने वो फ्रेमवर्क बना रखा था कि एक नेशनल लेवल पे आप क्या क्या चीजें यूज करोगे, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, आपके राइट्स क्या है सिटीजन्स के. तो अगर कुछ भी लेबर राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे तो मैं सीधा लिखती थी कि अच्छा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये बोलता है, या आपके फंडामेंटल राइट्स आपको ये बोल रहे हैं, ये आर्टिकल व्हाटएवर 27 से आ रहा है, 24 से आ रहा है. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप राइट्स एंड ड्यूटीज का फ्रेमवर्क इन माइंड. फिर उसके बाद मैं सोसाइटियल लेवल पे सोचती थी कि जो सर ने बताया कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोगे, कि अगर आप मॉब वायलेंस में if you're doing if you're participating, if you're doing breaching some principle, तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एज अ सिविल सर्वेंट ब्रेक कर रहे हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट. तो वो एक आर्ग्यूमेंट जो हमेशा मैं यूज करती थी सोसाइटल लेवल पे. फिर एक कलेक्टिव कॉन्शियंस का आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो वो सोसाइटल लेवल पे. फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे एज अ सिविल सर्वेंट, ऑल ऑफ दोज वर्च्यूज जो आप पढ़ते हो कि आप करेज नहीं दिखा पा रहे हो, समवन्स प्रेशराइजिंग यू, आपकी अकाउंटेबिलिटी है पीपल टुवर्ड्स द पीपल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वैसी इंडिविजुअल वाले जो सारे एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स ऑफ कंपैशन, आई थिंक ये सारी इंडिविजुअल लेवल पे चीजें आती थी. देन आई यूज्ड टू यूज जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है कि सॉल्यूशंस में मैं ये काफी यूज करती थी कि गोल्डन मीन सजेस्ट करता है कि आपको ये करना चाहिए, या फिर मिडिल पाथ ऑलवेज सजेस्ट XYZ. सिमिलरली आपका जो अपहोल्डिंग ड्यूटीज या निष्काम कर्म या फिर कांटियन प्रिंसिपल is not being upheld if I sort of do XYZ. तो उस तरह का मैंने पूरा एक लिस्ट ऑफ कंपेंडियम बनाया हुआ था, और ये ऐसी चीज है जो आप मल्टीपल केस स्टडीज में यूज करोगे. तो एंड इट यूज्ड टू आल्सो हेल्प मी विद रीजनिंग ऑफ माय क्वेश्चन आंसर्स. सो वो जो सर ने आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज बनाया था, मैंने उन सबको कंपाइल करके एक अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. सो आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी. एक चीज जो मुझे क्वेश्चन आंसर, कमिंग बैक टू द सेक्शन ए पार्ट, विच रियली हेल्प्ड मी वाज कि एक तो आइडेंटिफाई करना, जो कि आई थिंक सर ने शायद वो सिचुएशनल कोई एथिक्स का एग्जांपल भी दिया था कि ये क्वेश्चन आपके कौन से सिलेबस का पार्ट है, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे. यूपीएससी स्टॉप आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो आई थिंक उसके लिए आपको सिलेबस का बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, your brain should go कि अच्छा ये means versus end, वो कांटियन प्रिंसिपल में
के बारे में पूछ रहा है, आप जैसे ही वो लिंक फिगर कर लोगे, आपके पास वो सारे वो कांड और वो मीन्स एंड्स वो सब डिबेट का ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। तो वो जो आप बोलते कि हम पॉइंट्स क्या लिखें, पॉइंट्स ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस में एप्लीकेबल है, क्योंकि उस पार्ट ऑफ सिलेबस को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप वो फटाफट वो पॉइंट्स लिख दोगे और उसके साथ एग्जाम्पल्स लिख दोगे। सो आई थिंक इन द क्वेश्चन आंसर पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो चीज मैं गलती करती थी, जो आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर, मैंने पीयूष सर के क्लासेस सीखी थी, कि जैसे लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी यूज्ड इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैं ये दो चीजों को, जब लिंक होता था ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया, तो मैं वो लिख देती थी, बट इमोशनल इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट के साथ हाउ डू अप्रोच दोस क्वेश्चन। तो सर ने मुझे सिखाया था कि आप एक चीज को पकड़ो और उसके डायमेंशन निकाल के उसको सेकंड वाली चीज से लिंक करो। सो फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस की वो जो 5 चीजें हैं कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, वो आई थिंक 4-5 प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल को आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक करोगे, आपके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आई थिंक सर कैन एक्सप्लेन दैट बेटर, बट वो जो लिंकिंग वाली चीज है, सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजों से ही आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। एंड फॉर दैट राइटिंग इज important. Please don't just, if you're taking this session or any session or anywhere else, please write and then see the solutions. ये प्लीज कभी मत करना कि आप सिर्फ आंसर्स वीडियोस देखे जा रहे हो और आपको लग रहा है आपकी लर्निंग होगी। आपकी लर्निंग नहीं होगी। यू हैव टू सिट डाउन फॉर एन आवर, write. It takes 1.5 hours to write 6 case studies. You have to put in that 1.5 hours, then you watch those mistakes. I think that is the only way you can learn. So I think that is another thing that I wanted to speak about. So I've covered, I think, most of the points that I wanted to say. Piyush sir, is there anything else that you want me to cover? Then I'll show a couple of answer scripts of mine. I think that is the plan that I have in mind. So if someone can just write on the chat, then I'll just go ahead and share my screen. Sure, I think I can just share my screen then. Give me a second, please. Is my screen visible? If someone could just reply on the chat if my screen is visible. Okay, I think my screen is visible. So I'll just, just start the screen share again. Okay, so let me just share my screen. This is a question. This is one paper that I had written. So this was basically, a question about कि एक TV channel है और there is a communal hatred का news और कुछ वैसी चीजें हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? So basically it was around a media ethics वाली चीज. So what I have done is, ये सब ठीक है, मैंने अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दिया, मैंने महात्मा गांधी का हिंद स्वराज वाली चीज कोट कर दी, एंड आप एथिकल डायलेमा देखोगे. Just give me a second. Okay, I think my screen is now visible. I'm sorry, I'll just start again. Yeah. So I hope this is visible in a better manner. So this is basically a question on some media channels. So you can see I have written an introduction. मैंने ethical dilemma लिखा, but मैंने ethical dilemma को I did not, मैं randomly लिख रही थी कि duty towards stakeholders, shareholders. या और मैं कहीं लिख रही थी कि it's about achieving the right end or right means. मैं इससे अच्छा अगर मैं एक stakeholder perspective लेती कि इसका इम्पैक्ट उस कम्युनिटी पे क्या होने वाला है जिसके बारे में इंफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स बोली गई हैं, इसका इम्पैक्ट मीडिया चैनल पे क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग ऑफ प्रॉफिट्स,
तो वो क्या क्रिएट करेगा डायलेमा, इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल जर्नलिज्म पे क्या हो. सो यू नो दोस डायलेमास कुड हैव बीन रिटन इन अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. उसके बाद आप देखो मैंने ऑप्शंस एंड मेरिट्स लिखने में, डीमेरिट्स लिखने में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया. वन गुड थिंग दैट आई डिड वाज, जो सर बोलते कि हमेशा एग्जांपल्स हो, तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने कोड ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स को कोट किया है. सो ऑलवेज ट्राई टू शो, जहां पे आपको लगता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर सकते हो, आप उस चीज को लिखो. तो मैंने यहाँ जैसे कोड ऑफ एथिक्स लिखा है कि ये जर्नलिस्ट का कोड होता है जो आपका प्रेस काउंसिल पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, तो ये वायलेट हो रहा है. बट स्टिल यू कैन सी मैंने कितना टाइम इसमें स्पेंड किया है, यू नो, जस्ट टू राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. एंड देन उसके बाद मैं कोर्स ऑफ एक्शन पे आ गई. जैसे सर बोल रहे थे कि आप सिर्फ एक्शन लिखते हो कि आई विल वेरीफाई द इंटरव्यू, आई विल सेट अप अ कमिटी एटसेट्रा एटसेट्रा. मैंने खत्म कर दिया आंसर. मैंने ये लिखा ही नहीं कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया या उसका रीजन क्या था, मेरी थिंकिंग उसमें क्या थी. सो सी दिस I remember getting scolded very badly when sir evaluated this answer. So this was, I think, one of the questions. Similarly, you know, I have made similar mistakes again in most of the questions. आप देखोगे यहाँ पे भी, you know, मैंने approach that Ramesh should take as an SP. यहाँ पे देखो आप, ये मैंने approach लिखी है. तो मैंने approach तो लिख दी, लेकिन मैंने उसका explanation ही नहीं लिखा कि why am I, you know, taking this step. Similarly, this, you know, child, I think ये child labor का एक question था. So कुछ चीजें जो आपको अच्छी हैं, जो इसमें जो आपको करनी चाहिए कि आप देखो, मैंने आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, आर्टिकल 39 विच मेक्स इट अ ड्यूटी, तो मैंने यहाँ पे जो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिटी की नॉलेज थी वो मैंने यहाँ पे लगा दिया. उसके बाद आप देखोगे इसमें मैंने एथिकल इश्यूज लिखे हैं. एंड देन यू नो द ऑप्शंस आर हियर, my course of action, and then the conclusion. You know, nowhere I have shown the larger perspective. जैसे सर बोल रहे थे कि conclusion में आप larger perspective दिखाओ ना, कि आप systemically इस issue को कैसे solve करोगे. तो मैंने इसमें दिखा दिया कि हाँ, as a future civil servant मुझे courage होना चाहिए, but मैंने larger systemic issue की, जब society जब तक नहीं बदलेगी, child labor का issue solve नहीं होगा, तो मैंने वो systemic चीज को address नहीं करी. So I think, you know, that was, you know, those were some of the comments that I can remember जो मुझे पीयूष सर ने दिए थे. Now I will go back to, you know, I will go to another answer script that I had actually written after implementing. ये मैंने मेंस के शायद एक हफ्ते पहले लिखा था, and it represents very closely the actual answer style that I had during the exam. So, you know, I will just show this to you, and इसमें आप देखना मैंने वो सारी mistakes को correct किया है. So I'll just go to the case study section first, and then we'll come back to the the section A. So इसमें आप देखो मैंने case study में here, for example, जैसे you know जो मैं आपको बता रही थी पहले, I'll also keep giving you some examples of the points that I have already you know told you about. तो एक चीज मैं जो आपको हमेशा बोल रही थी कि आप quotations, examples याद रखो. तो यहाँ पे ये question था, ये corporate ethics के ऊपर था. तो मैंने बहुत जल्द, मतलब मुझे बिल्कुल, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, वो सब बातें आएंगी, ट्रस्टीशिप के ऊपर मुझे लिखना है, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है. तो मैंने ये कोट याद कर रखा था कि ट्रस्टीशिप कन्वर्ट्स अ कैपिटलिस्टिक बिजनेस इनटू एन इगैलिटेरियन वन, और ये मैंने एक्चुअली अपने पेपर में कोट भी किया था. सो यू नो जैसे, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद अ कोटेशन, और आई यूज्ड टू स्टार्ट विद जैसे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं या राइट्स है, मैं उन सब चीजों से आई यूज्ड टू स्टार्ट विद with sort of, you know, or a quote or an anecdote or something which used to, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, but like that used to just add some interesting dimension. उसके बाद आप यहाँ पे ethical dilemmas देखोगे, तो यहाँ पे मैंने you know moral duty as a you know जो government की थी, तो आप देखो मैंने government as a stakeholder यूज किया point 1 में. फिर उसके बाद मैंने second में you know personal ethics, वो personal level पे मुझे कैसे you know courage को compromise कर दूंगी मैं अगर मैंने वो चीज नहीं किया तो. फिर मैंने अपना प्रोफेशनल, जो कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से था, मैंने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन दिखाया यू नो टुवर्ड्स प्रॉफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे मैंने शेयर होल्डर्स को किया. उसके बाद मैंने ब्रीच ऑफ इकोसेंट्रिसिटी, कुछ क्योंकि इसमें कुछ एनवायरनमेंट का रोल था, तो एनवायरनमेंट वाज आल्सो अ शेयर स्टेक होल्डर, तो मैंने एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल लिखा है कि हमने इकोसेंट्रिसिटी ब्रीच करी है. उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप, जो आपका पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट का है, तो वो कंपनी एज अ स्टेक होल्डर यूज करके मैंने कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप लगाया. एंड देन आई थिंक उसके बाद लोकल पीपल, एथिक्स ऑफ केयर ब्रीच्ड बाय विथ रिगार्ड्स टू लोकल पीपल. तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आपके जो स्टेक होल्डर्स है
उनको यूज किया और मेरे इतने अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे एथिकल डायलेमा सामने आ गए. So, Piyush sir really taught me, like he really inculcated this in me, which was excellent. उसके बाद अब देखो options, options लगाने में मैंने, I've just written it very shortly. If you see, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं बहुत छोटे छोटे में options लिखने लग गई, because I wanted to spend more time in, giving my explanation. तो यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पे मैं explanation ज्यादा, otherwise I would have just concluded my answer एक छोटा सा लिख के. But here, see, I've given the explanation that they are a part of society, they must promote ethical practices, they must abide by law of land. तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मेरा रीजन है कि मैं law of land को abide, uphold करना चाहिए. उसके बाद, they derive their resources from planet. तो मैं वो उन चीजों के रीजनिंग लिखने लग गई. And then of course I gave my conclusion, जिसमें मैंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिया कि कंपनीज कैन ओनली बेनिफिट अगर आप, जो जैसे एक माइकल पोर्टर की फिलॉसफी होती थी कि क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज, तो मैंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिया कि कंपनी तभी बेनिफिट हो पाएगी जब वो शेयर्ड वैल्यूज क्रिएट करेंगे. तो आप इसमें देख सकते हो कि मेरा अप्रोच कितना फंडामेंटली चेंज हो गया था, बिफोर माई एक्चुअल एग्जाम. एंड दिस केम ओनली विद प्रैक्टिस. So similarly, I think this is a very good example of how I sort of benefited from the class, and writing actually and practicing actually helped me improve my marks. Similarly, आप ये देखो, मैंने, I've done this. I don't want to go over all of this, but यही चीज मैंने हर question में follow करी है, and it really really helped. And just move back to section 1 again. तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, जिसमें आई हैव इम्प्लीमेंटेड द थिंग्स दैट which I had spoken about. So आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें I've just started with the question says discuss the role of virtues and ethics in enhancing the fight for sustainability. तो इसमें virtues, इसमें मैंने स्टार्ट किया अपना एक इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि how virtues and ethics are important in sustainability. I gave the example of, I just put in a quotation कि वो जो प्रकृति रक्षति रक्षते, तो ये मैंने कुछ चीजें याद करके रखी हुई थी कि मैंने अपने नोट्स में जहां एनवायरमेंटल एथिक्स आएगा वहां पे मुझे ये कोट यूज करना है, या फिर मुझे वो एनवायरमेंट हैज एवरीथिंग फॉर पीपल्स नीड बट नॉट फॉर पीपल्स ग्रीड, ऐसे करके 3-4 कुछ कोटेशंस थे जो मैंने याद करके रखे थे. तो जैसे ही मैं कुछ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी देखती थी, वो माय माइंड वुड बी लाइक अच्छा ये लिखना है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था. सिमिलरली आपने देखा होगा नीचे एक वो डॉक्टर्स वाला केस स्टडी था, तो उसमें मैंने वैद्यो परमो हरि ऐसे करके मैंने कुछ याद किया हुआ था कोट, तो वो डॉक्टर्स वाला देखते साथ ही मैंने वो कोटेशन लगा दी थी. सो इस तरह का आपका होना चाहिए. उसके बाद आप देखिए, मैं यहाँ पे रोल ऑफ वर्च्यूज एंड एथिक्स इन सस्टेनेबिलिटी के मैं रीजंस दे रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रही हूँ. मैंने लिखा है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मटेरियलिज्म एंड द टेंडेंसी टू कंज्यूम मोर. सो दैट इज अ रीजन व्हाई virtue and ethics helps in sustainability, कि आपकी मटेरियलिज्म रिड्यूस होती है. उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया? एग्जांपल के लिए मैंने जैनिज्म का अपारिग्रह प्रिंसिपल यूज किया कि आपको जैनिज्म फिलॉसफी अगर आप अडॉप्ट करते हो एज एथिक्स, तो उससे आपका इट टीचेस यू टू यूज लेस मटेरियल. तो मैंने उसका एग्जाम्पल ये दे दिया. उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्रीड फॉर एक्वायरिंग मोर वेल्थ एंड रिसोर्सेज. फिर मैंने इनफैक्ट इसमें तो मैंने एग्जाम्पल भी नहीं दिया. देन आई रोट द थर्ड पॉइंट कि एथिक्स विल हेल्प गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो उससे आपका सस्टेनेबिलिटी आएगा. सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So that is, if you use that ethics, it will help in reducing pollution, which is a sustainable form of life. But if you are ethical, it will help in increasing compassion for other forms of life or environment, which will help in sustainability. For example, saying no to animal testing in cosmetic industry. मैंने ये example दिया, but इसको मैंने सिर्फ as a supporting argument use किया है कि ethics और virtues आपको compassion सिखाता है, जो आपको environment sustainability में help करेगा. उसका एग्जाम्पल क्या है कि एथिक्स आपको बोलता है कि आप एनिमल टेस्टिंग मत करो इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, व्हिच इज गोइंग टू लीड टू मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. सो आप देख रहे हो कि रीजन दिया है और रीजन को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है. सो दैट इज व्हाट आई डिड विद एवरी क्वेश्चन. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन. और कंक्लूजन में भी मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ थोड़ा सा अपना विजन दिखा पाऊं, दैट आई कैन थिंक बिग on by in what perspective is this question being asked.
it is very important to answer that. तो मैंने जैसे लिखा है कि long term sustainability needs change of heart. उसमें rules and regulations नहीं हो सकते, क्योंकि उस perspective से पूछा गया है कि rules and regulations तो बहुत है. तो मैंने लिखा कि rules and regulation can only be enforced for some time, but change of heart is what will lead to sustainable change, which can only be which can only come from ethics. तो मैंने conclusion में ये statement दिया. तो इस तरह से if you see majority of the questions I have done this I was talking about that moral absolutism वाला question, कि मैंने moral absolutism देखा, उसके बाद आप मेरे points पढ़ोगे तो आप देखोगे ये सारा वो means to an end वाले points लिखे हैं मैंने. जैसे ये इसमें भी मैंने example याद कर रखा था कि killing a person even in self defense would be wrong if you are morally, if you follow moral absolutism. तो उस तरह से मेरा मतलब जैसे फिर मैंने डाइवर्स एग्जांपल, तो मैंने महाभारत में युधिष्ठिर का एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे. तो मुझे ये नहीं था कि मैंने ये यहाँ सोचा, मुझे बस इतना पता था कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म इस कॉन्सेप्ट, मीन्स, एंड्स, कांटियन प्रिंसिपल, वो सब चीजों से रिलेटेड है. उसके पॉइंट्स मेरे बने हुए हैं, उसके एग्जांपल्स मेरे बने हुए हैं, और मैंने बस उसको यहाँ पे अप्लाई किया है. So, which is why it's very important to have your notes in place. And jo sir bolte, I think, this is something that I wanted to share. I think that's it from my end. I don't know, like, are there any questions, or if you want, I can look at the questions. But yeah, I think that's it from my end. Piyush sir, is there anything else that you want me to cover? Okay, so he's asking me to move to the conclusion. So I think I've told you the things that I have tried to do. In conclusion, I'd just say that practice writing, because this is, at the end of the day, mains is about endurance and writing. So I think that is the only way you can improve. So the more you write, the more you, and after writing, usko bhul mat jao. The feedback that you're getting, ट्राई एंड इम्प्लीमेंटेड. तो मेरा ये होता था कि जो गलतियां मैंने पिछली बार करी है, मैं अपना टेस्ट लिखने से पहले मैं वो रिवीजन करती थी कि मैंने क्या क्या गलतियां करी है, कि आई यूज्ड टू प्रॉमिस माय सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक इन माय नेक्स्ट टेस्ट. सो यू हैव टू कीप दैट अप्रोच इन माइंड, क्योंकि अदरवाइज आप जो इतना मॉक्स लिखोगे, दैट इज अ वेस्ट. इफ यू डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू कांट एक्सपेक्ट अ बेटर आउटकम. सो टू एक्सपेक्ट बेटर आउटकम, you have to make those changes, and it will come incrementally. Don't think that it will happen all of a sudden. So I think that's it from my end. So yeah, thank you.